Hi, so welcome to DCA. Today we are starting a new series on our social media channel, YouTube channel, where we will be sharing you some interesting facts, the untold stories of defense forces, which might motivate you, which may give you goosebumps. आपको सुन के काफी आश्चर्य भी हो सकता है. इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मे बी यू नो, मे यू डोंट नो, बट आई एम श्योर दैट दिस विल फोर्स यू टू थिंक. आपको अच्छा लगेगा. मे बी दिस विल बी a motivating session for you, or you can see that set of quiz. So I am giving you some hint, right? In this series, we'll be uploading some videos. You can say that you have to identify the person. So today I have some set of hints for you. I am giving you some hint, right, about, and you need to identify that person, right? So my hint is, I am talking about Indian Air Force Chief. I am talking about Indian Air Force Chief, not right now. हो सकता है कि वो पहले के भी हो, right? I am talking about an Indian Air Force Chief, of course ex, not अभी वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, right? भदौरिया साहब की बात नहीं कर रहा मैं. Whose father worked as collector in Ranchi. His father was an IAS officer who was posted as collector, district collector, or DC जिसको कहते हो पंजाब में आप, right, in Ranchi. First hint. So that means that IAF chief is actually son of an IAS officer. Second hint, he served as chief secretary. Chief secretary is one of the highest posts in the state amongst IAS, right? He served as chief secretary to the CM of Bihar. And giving you hint, some interesting thing, he was chief secretary to the Bihar CM named जगन्नाथ मिश्रा. जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उनके चीफ सेक्रेटरी थे. जगन्नाथ मिश्रा जी का नाम आपने चारा घोटाले में भी सुना होगा, लालू जी के साथ. काफी सारे लोग थे. जगन्नाथ मिश्रा को फाइनली कुछ दिन के जेल के बाद बरी कर दिया गया, बट लालू जी अभी भी रांची की उसी जेल में हैं. तो ये एक दूसरा हिंट है, उसी रांची जिला के जहां के इनके फादर आईएएस ऑफिसर थे, कलेक्टर रह चुके थे. थर्ड हिंट, हिज ग्रैंडफादर एक्चुअली सर्व्ड एज ए कैप्टन इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी. तो इंडिपेंडेंस से पहले जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो हमारी फोर्सेस लगी थी, दैट वाज ब्रिटिश इंडियन आर्मी. तो हिज ग्रैंडफादर वाज एक्चुअली अ कैप्टन इन दैट आर्म्ड फोर्सेस, राइट? सो दिस इज थर्ड जनरेशन. तो आपको इस 3 स्टेटमेंट से क्या पता लगा? You came to know that this IAF chief actually was third generation officer, right? Next, this is another interesting thing. Maybe you are not aware of this. This IAF chief served as ADC. जब आप प्रेसिडेंट की कभी राष्ट्रपति भवन की फोटो देखते हो, whenever you watch, president house, president standing for some, let's suppose anthem, or you can say that honoring someone, पद्मश्री सम्मान, ये भारत रत्न के टाइम, उनके बगल में एक ऑफिसर आप देखते होगे, नेवी के, आर्मी के, या फिर एयरफोर्स के. सो दिस IAS, इंडियन एयरफोर्स चीफ, वॉज एक्चुअली एन ADC. 8D कैंप कहते हैं उसको, थोड़ा फ्रेंच वर्ड है 8D कैंप. तो जो ऑफिसर होते हैं काफी हाई लेवल के होते हैं, 8D कैंप टू प्रेसिडेंट. सो ही एक्टेड एज ADC टू प्रेसिडेंट. ADC गवर्नर के साथ भी होते हैं, आपने अगर ध्यान दिया. हम इस टॉपिक पे अलग से भी डिस्कस करेंगे ADC पे, राइट, बिकॉज इन लीस्ट टॉक्ड अबाउट है नाउ. Overall, his journey was St. Xavier School in Ranchi to St. George School in Mussoorie, RIMC Dehradun, NDA. Of course, he was an alumni of NDA, right? He is actually. And now, the last one, last but the least, he retired as Indian Air Force Chief. So, ये 4-5 मैंने आपको hint दिए. Now, you have to identify that person, right? And maybe you might not be aware of these facts, but this is something which you can observe, that the legacy, right? Interesting stories of this armed force chief, which I am talking about, and you might be eager to know. अभी तक शायद आपने सोच लिया हो, तो मैं अब आपको नाम बता देता हूं. The person is our ex-chief of Air Force, B.S. Dhanawasa. He belongs to Punjab originally by root, grandfather, right? So nearby Mohali district, घरुआ में, यहाँ पे एक जगह है, जब आप लुधियाना की साइड जाओगे तो आपके पास घरुआ मोरिंडा के आसपास आता है. इट्स हार्डली 30 मिनट्स फ्रॉम मोहाली. वहां पे उनके दादाजी रहा करते थे, बट हिज फादर वाज एन IAS ऑफिसर, was IAS officer,
right? He retired actually, and he was इनका जो जन्म हुआ था, right? PS धनोआ साहब का, he actually was born and brought up in देवघर. देवघर अब झारखंड में हो गया. Earlier देवघर, जहाँ पे एक बड़ा ही you can say एक holy shrine है. You can say that if tourist destination है, बहुत ज्यादा भक्ति वाली चीज होती है. विश्वनाथ, I think that is called as Baijnath Dham. Sorry, it's called Baba Baijnath Dham. Lord Shiva Temple काफी popular है. Nowadays it is in Jharkhand. तो सावन का जो महीना होता है उस टाइम काफी लोग जाते हैं. He was born and brought up there, right? His father, right, Suren Singh. Sri Suren Singh was an IAS officer who served as chief secretary to the Bihar CM. Now he was son of an IAS officer, right? Born and brought up in initial schooling in Saint Xavier Ranchi, Saint George Masuri, RIMC Dehradun, and then ultimately via NDA, via ADC to president to IAF Chief. So you can see the journey, the short, एक बंदे के बारे में इतनी सारी credentials. Now this might give you some goosebumps. आपको interesting लगा हो? If you feel it is good, do write us, do comment, do share, ताकि we can come up with the next some interesting stories. We have lots and lots to discuss, stories like this where we can discuss olive green in blood. Thank you. Hope you enjoyed this session.